Welcome to ASK MBA. Now guys, आज के इस वीडियो में as you can see we are going to solve Parajumble. Now guys, Parajumble एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका कोई तरीका या कोई फॉर्मूला नहीं है, but then there is a way by which smartly you can answer this question. और आज के इस वीडियो में of course I will explain you how to solve Parajumble by being smart, by being sensible. ऑलरेडी मैंने ऑड वन आउट पे एक बहुत पुराना वीडियो जो मैंने लॉकडाउन में बनाया था, इट्स देयर एंड इट हैज गैदर्ड सो मेनी व्यूज. यू गाइस कैन चेक दैट. आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो भी आप जाके देख सकते हैं. सो गाइस, पैराजंबल एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, और ऑफ कोर्स इसलिए तकलीफ देता है बिकॉज वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन इंग्लिश. ऑफ कोर्स वी आर इन अ कंट्री वेयर इंग्लिश इज नॉट इवन आवर सेकंड लैंग्वेज. फॉरगेट अबाउट फर्स्ट लैंग्वेज, नॉट इवन थर्ड लैंग्वेज. पहली हमारी हिंदी होती है या मराठी या जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, आप जिस भी स्टेट के हैं उसके बाद. सो खैर, ये सब चर्चा तो चलती रहेगी, बट लेट्स टॉक अबाउट पैराजंबल कि भाई पैराजंबल हमें सॉल्व कैसा करना है. आपको जैसे ही अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे 5 लाइंस दिखाई देंगे, लिखा रहेगा 1 2 3 4 5, तो यूजुअली या तो वो क्वेश्चन आपका, लेट मी चेंज द कलर हियर, या तो वो क्वेश्चन आपका पैराजंबल का होगा. Of course, as the name suggests, parajumble, it is nothing but a paragraph that has been jumbled. या तो वो पैराग्राफ पैराजंबल होगा, या तो वो आपका क्वेश्चन होगा ऑड वन आउट. इसको कई लोग ऑड मैन आउट भी बोलते हैं, विच इज नॉट राइट, बट देन ठीक है. ऑड वन आउट मतलब इट्स लाइक पैराजंबल. आपको 4 से 5 लाइनें दी रहेंगी एंड यू हैव टू रीड दोज लाइंस एंड फिगर आउट कि कौन सा वो सेंटेंस है जो जंबल्ड पैराग्राफ का हिस्सा नहीं है, राइट. सो ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, इट इज आस्क्ड इन कैट एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन. कैट में 3 से 4 क्वेश्चन ऑड वन आउट या पैराजंबल के आएंगे. ऑड वन आउट का एक आधा आ सकता है, पैराजंबल के 3 से 4 आ सकते हैं, कुछ ऐसा नंबर रहेगा. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व ऑड वन आउट राइट नाउ हियर. नाउ ऑड वन आउट के लिए सबसे पहली चीज ये रहेगी, आपको पेयर्स ढूंढने हैं, जैसे कि आप पैराजंबल में ढूंढते हैं, बट पेयर्स ढूंढने हैं. पेयर्स किसके ढूंढने हैं? सेम कंटेंट के. यानी कि आपको ये क्वेश्चन एक्चुअली इजी होता है. व्हाई? बिकॉज दिस क्वेश्चन, in this question you do not have to align the sentences into sequence, but then you have to figure out कि कौन सा वो सेंटेंस है जो इस जंबल्ड पैराग्राफ का हिस्सा नहीं है. To explain this thing further, let's say कि कोई ऐसा एक रैंडम पैराग्राफ दिया रहता है, कहीं किसी राइटर ने लिखा हुआ है, और एग्जामिनर उसमें से कुछ लाइंस ले लेगा. लेट्स से ये मिड की कुछ लाइन लेके ले लेगा, लेकिन ये लाइंस में वो आपको सबसे बड़ी चीज ये कि वो जंबल देगा. लेट्स से कि 1 2 3 4 5, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वो आपको जंबल कर देगा और उसमें एक और लाइन जोड़ देगा, मे बी 6th लाइन जो आपको क्वेश्चन में देगा, एंड यू हैव टू फिगर आउट कि वो एक्स्ट्रा लाइन कौन सी है. Now, if you put yourself in the shoes of examiner, you ask yourself how you're going to make a student go bonkers or go confused. Answer is simple: to speak in similar language of the content. So let's understand. Rather than I just keep on explaining you, let's solve the question. तो पहली चीज कि आप 5 lines पढ़ेंगे. So first is read all the lines. All the lines. बट बात ये है कि आप लाइंस तो पढ़ेंगे सारे, बट स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट लाइन एंड स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट लाइन. ओके, आई विल बी गोइंग लाइव ऑल्सो सून सॉल्विंग मेनी क्वेश्चंस. और ये क्वेश्चन गाइस कैट 23 के स्लॉट, आई थिंक स्लॉट 2 का है. कैट 23 का पेपर का स्लॉट 2 का क्वेश्चन है. सो आई विल रीड फ्रॉम द 5th line onwards. Although parents might believe that self-care would be beneficial for development, recent research has found quite the opposite. Although parents might believe that self-care would be beneficial for development, recent research has found quite the opposite. 4th line. In research and practice, the phrase children in self-care has come to replace latchkey in an effort to more accurately reflect the nature of their circumstances. Although self-care generally points to negative outcomes, it is important to consider that the bulk of research has yet to track long-term consequences. Latchkey children refers to the children who routinely return home from school to empty homes and take care of themselves for extended periods of time.
सेल्फ केयर पर्टिकुलरली लिंक्स टू लोनलीनेस, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एंड नेगेटिव एकेडमिक आउटकम्स। अब अगर मैंने क्यों आपको बोला कि व्हाई यू रीड दीज लाइंस फ्रॉम द लास्ट लाइन ऑनवर्ड्स, बिकॉज आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आया कि यार ये करना कैसे, देन यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। वाई? बिकॉज अगर मुझे टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा कि यार इन 5 लाइनों के बारे में क्या चर्चा चल रही है, सो आई विल बी एबल टू अलाइन देम इनटू सीक्वेंस। अब एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ कॉमन वर्ड्स देगा, जैसे कि सेल्फ केयर, लैच की वगैरह वगैरह, बट वी डू नॉट नीड टू फोकस ऑन दी matching words. The first mistake what students do, okay, they try to find the word by the matching words. It is wrong. It is a wrong practice. Rather, you should not be doing this, but you should be doing on the content. आपका content same होना चाहिए। Now यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो self care की बात चल रही है, और बात चल रही है कि मैं अकेले कैसे रह सकता हूँ और कैसे होता है। अब definitely sentence 2, latchkey children refers to children who routinely return home from school to empty homes and take care of themselves for extended period of time. और first sentence, self care particularly links to loneliness behavior. पता चलता है पढ़ के कि ये उन लोगों के बारे में सेम कंटेंट पे बात कर रहा है जो स्टूडेंट, जो बच्चे अकेले रहते हैं, जो अपने आप को सोसाइटी से अलग रखते हैं क्योंकि उनके घर पे कोई होता नहीं है। और ये भी मुझे पता चलता है कि parents might believe that self-care would be beneficial for development. Recent research has found quite the opposite. क्या कि latchkey refers children, self-care particularly links the loneliness, तो fifth और one साथ में जा रहा है। तो definitely अगर मैं pairing करता हूं तो मुझे इतना तो पता चलता है if I read this कि यार fifth sentence, first sentence and second sentence same content की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब मेरा आंसर फिफ्थ वन और सेकेंड सेंटेंस तो नहीं होगा, बिकॉज दिस इज ऑड वन आउट। आई नीड टू फिगर आउट द सेंटेंस दैट इज नॉट टॉकिंग इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। तो फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ सेंटेंस मेरा चला गया। अब आंसर या तो थर्ड सेंटेंस होगा या तो मेरा फोर्थ सेंटेंस मेरा आंसर होगा। सेकेंड, फर्स्ट और फिफ्थ तो मेरा आंसर नहीं है, या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा। Now I read the third one. Although self-care generally points okay, for in research and practice, the phrase "children in self-care" has come to replace latchkey in an effort to more accurately reflect the nature of their circumstances. So we were talking about the research and also about how the stuff is. Ab exam mein, I always tell students ki if you are reaching to a point where you are unable to find out what is the answer, first try to reach those two options which could be answer. 5 ऑप्शन में से या 4 ऑप्शन में से एक्चुअली सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, बट उन लोगों के लिए जिनको समझ में आता है। तो either your answer is option third or option fourth. I want you guys to pause this video and ask yourself what could be the answer. Try to align them. However, I hope you have done it. Please pause it and try to figure it out if you're watching it. Okay, I hope you paused the video, you checked the answer. The answer is option 3. 3 is the odd one out. अब आप देखोगे कि एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है। एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए कुछ कॉमन वर्ड्स लिए हुए हैं, जैसे कि सेल्फ केयर, ठीक है, रिसर्च, ऑल्दो एंड ऑल, बट देन fourth one goes in the tandem of 1 2 3 4 5. How to solve this question in another way? By figuring out कि कैसे आप इसको एक सीक्वेंस में लगा सकते हो। अब बारी आती है पैराजम्बल की। Okay, so now parajumble I have given you here, but let's solve this parajumble first. 4 lines. Now पहली चीज आप क्या करोगे parajumble में हमेशा, the first thing what you should be doing is in parajumble is simple कि आप start reading from the last line. So what I'll say, last line first, and then move and then go upwards. मतलब आप पहले लास्ट लाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थर्ड लाइन, सेकंड लाइन, फोर्थ लाइन, फर्स्ट लाइन, बिकॉज द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू हाइड द कंटेंट लेटर ऑन। अगर आपको मेन कंटेंट ही समझ में नहीं आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। टिप्स लाइक फाइंडिंग अ कंजंक्शन लाइक ऑल्दो, दिस, दैट, दे विल हेल्प बट नॉट ऑलवेज। अब ये पैराजम्बल है, पहला वाला ऑड वन आउट था, यहाँ पे मुझे पता करना है कि सीक्वेंस क्या है। फर्स्ट आई विल रीड द फोर्थ लाइन। ह्यूमन consciousness is often called an emergent property of the human brain.
Nonetheless, the sum of all neurons in the nervous system generate complex human emotions like fear and joy, none of which can be attributed to a single neuron. So, second sentence, although the human brain is not yet understood enough to identify the mechanism by which emergence functions, most neurobiologists agree that complex interconnections among the parts give rise to qualities that belong only to the whole. Like the ants that make up a colony, no single neuron holds complex information like self-awareness, hope, or pride. So after reading these four lines, you get to know कि ये जो पैराजम्बल है ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है हमारी consciousness की, neurons की and whatnot. So it is very important to understand what the topic is about or what the passage or these jumble lines are about so that you can align them into sequence. I give you some time to go through it and hopefully you can figure out what exactly is going on. अब अगर मैं ये सेंटेंस पढ़ता हूं तो मुझे सबसे पहली चीज द फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड बी डूइंग इज फाइंड द स्टार्ट which sentence can start the topic or maybe which sentence can end the topic or else make a pair of two sentences जो साथ में जाएंगे. तो अगर मुझे ये तीन में से एक चीज भी मिल गई सो आई कैन स्टार्ट joining the sentences or I can start aligning the paragraph as per that. Please try to solve, guys. Guys, यहाँ पे I give you a clue कि fourth option जो है, okay, one second, fourth option जो है that is the start. Fourth option is the start. The second is okay, up to you. Third is up to you, but the last is the second option. So the start is fourth. This is the start, and second is the end. Now figure out what could be the answer. Either it could be 413 or it could be 431. So maybe this combination is right or maybe this combination is right. What do you think? What could be the answer? Now guys, understand. Human consciousness is often called an emergent property of the human brain. उसके बाद like 4132 उसका आंसर है. The right answer is okay. Let me tell you that. पहले उसने आपको बताया है. Fourth में वो आपको क्या दे रहा है? Start दे रहा है. Start of the topic. Okay. Then why? And then one is going to come. One is going to do like the ants. अब उसने उस topic को क्या किया? उसने उस topic को explain किया. Like the ants that make up a colony, no single neuron hold complex information like self-awareness, hope or pride. Then third में उसने उसको contradict किया. Nonetheless, the sum of all neurons in the nervous system generate complex human emotions like fear and joy, none of which can be attributed to a single neuron. उसने इस explanation को आगे किया और end में ये उसने उसे end किया यहाँ पे. Although the human brain is not yet understood enough to identify the mechanism by which emergence functions, most neurobiologists agree that complex interconnections among the parts give rise to qualities that belong only to the whole. Now guys, I'm just trying to give you an approach slowly but surely. I'm going to give you more sessions of Parajumble. I will be explaining more ways and more and a better way to do it, maybe what I can explain here. Now similarly, this is the next one more question. I want you guys to read the last line. फोर्थ लाइन आप पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप थर्ड लाइन पढ़ेंगे. Western Christian concepts tend to deny or feign ignorance about the existence of a genuine and enduring indigenous African tradition. Okay, let me make it a little small on the screen so that you guys can. One second.
ये fourth one है, ये third sentence है. Read the fourth and third, then the second and one. The fourth line, Western Christian concepts tend to deny or feign ignorance about the existence of a genuine and enduring indigenous African tradition. However, their views contradict the reality. For a rich and sustaining local African culture, ethos exists for all who care to see and experience. And then the second one, and then the first one. I want you guys to pause the video, read 4, 3, 2, and then of course the first sentence, and figure out what the answer is. I won't be giving you the answer in this video. In fact, I want you guys to figure out what the answer is and share your answers in the description box. I hope this small video or this video is going to give you some clarity how to approach odd one out and Parajumble. I'm going to explain in depth when we'll be taking live sessions near the CAT examination. Stay blessed, guys.